अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा विज़िट है कैरियर चिलर्स 19FA सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स हैं प्लांट हाउस का, जो कि हमने 2019 में अपग्रेड किए थे। तो 2019 में उसका कैटल कंट्रोल के साथ असल में रेट्रोफिट किया था उनको ओल्ड कंट्रोल से, क्योंकि उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और काफ़ी इश्यूज थे। तो जो कि मैन्युफैक्चरर ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये चिलर नहीं चल सकते, तो हमने उनको अपग्रेड करके 2019 से अब तक चलाए हैं, जिसमें आपको दिखाएंगे वहाँ पे रनिंग आवर्स कितने हैं। टोटल 4 19FA हैं, 2 19XL चिलर्स हैं। तो हमारे लिए भी एक बड़ा टास्क था, चैलेंज था, तो अल्लाह का शुक्र है पूरा हुआ। और आज 6 साल के बाद आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि कैसी है। तो बड़े अच्छे हैं, परफेक्ट है। तो एक अच्छी यादें हैं। पुरानी जब रेट्रोफिट किया था तब तो हमारा कोई वीडियोस का कोई प्लान नहीं होता था, तो फ़िलहाल उनमें इस वीडियो में हम आपको सिर्फ उसकी फ़ोटोज़ ऐड किया करेंगे, ताकि पुरानी यादों की एक झलक कि कैसे कैसे काम ओरिजिनल कैसा था और अब रेट्रोफिट होने के बाद कैसा है। तो चलें, इंशाल्लाह कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
2800 hours running है। How many amperes? These are the contactors. Which chiller is running now? Here, number 5 here. This one? जी फिर ब्लॉक के एंड में निकले हैं वहाँ से। तो वहाँ तो शोर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए वहाँ तो और वीडियोस नहीं बना सके। तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे विज़िट करके, क्योंकि 5-6 साल पहले हमने जॉब कंप्लीट की थी वहाँ पे। उसके बाद दोबारा काम तो होते रहते हैं, लेकिन हमारी टीम जाती है। मैं आज काफ़ी टाइम के बाद गया था, तो मैंने सोचा चलो आपको एक वीडियो बना के, हमारी जर्नी ऑफ लाइफ का ही हिस्सा है कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। तो 6 साल के बाद वो चिलर्स परफेक्टली चल रहे थे, जो कि आज से 6-7 साल पहले, बल्कि 8 साल पहले मैन्युफैक्चरर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे। तो चल रहे हैं टोटल ऑलमोस्ट 30-32 ईयर्स हो गए, बल्कि 1992 से 1994 में वो आई थिंक कमीशनिंग स्टार्टअप हुआ था। तो रिसेंटली हमने वहाँ पे एक चिलर अब ओवरऑल भी किया था, जिसका मैकेनिकल कोई इश्यूज़ थे। तो वो भी आई थिंक लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, नहीं है तो देखें। तो इस तरह की और वीडियोस भी हमारे जो फील्ड से रिलेटेड है, बेसिकली हमारी फील्ड है एयर कंडीशनिंग, HVAC, लार्ज टनेज में, लार्ज कैपेसिटीज़ में आ जाती है। 5 टन से 25,000 टन तक की मशीन्स करते हैं, क्योंकि गल्फ़ में आपको पता है खाने के बगैर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन एसी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। एसी ये हमारी बेसिक फील्ड है।